Hi, this is Bhavshan Mukherjee and welcome to my YouTube channel I Love Electrical Engineering. Today I will discuss on humming sound of transformer. जब ट्रांसफार्मर लोड में चलाता हूँ, जब कोई EHV व कोई भी ट्रांसफार्मर जब लोड में चलता है उस समय ट्रांसफार्मर से एक साउंड निकलता आता है, दैट्स कॉल्ड हमिंग साउंड. तो ट्रांसफार्मर जब चलता है हमिंग साउंड क्यों जनरेट होता है, टुडे आई विल डिस्कस ऑन दैट. सो ट्रांसफार्मर का जो कोर होता है वी नो that is just silicon steel. Basically this silicon steel is used for the core of any transformer, and silicon iron का जो core होता है that is laminated to reduce the eddy current loss. जो core रहता है core is laminated to reduce the eddy current loss. तो ये जो silicon steel होता है that is one type of ferromagnetic material. The silicon steel is one type of ferromagnetic material. तो जो ferromagnetic material होता है इसका एक property होता है, उसके अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है, कोई भी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के अंदर जब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, कोर के अंदर जो मॉलिक्यूल्स होता है, मॉलिक्यूल एक्सपांड होता है फिर रिड्यूस होता है, एक्सपांड होता है फिर रिड्यूस होता है डिपेंडिंग ऑन द ऑपरेटिंग साइकिल. सपोज कोई 50 हर्ट्ज सिस्टम है तो ये एक साइकिल में 100 टाइम्स का सिस्टम चेंज होगा. तो ये जो मॉलिक्यूल्स का एक्सपांडेशन एंड रिडक्शन जो होता है, मॉलिक्यूल्स का एक्सपांडेशन एंड रिडक्शन होता है, दैट्स कॉल्ड मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. फेरोअलॉय मेटल का अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होता है उसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है और मॉलिक्यूल एक्सपेंड होता है एंड रिड्यूस होता है, एक्सपेंड होता है एंड रिड्यूस होता है, दैट्स प्रॉपर्टी इज कॉल्ड मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन. ड्यू टू दिस मैग्नेटिक स्ट्रिक्शन इफेक्ट a humming sound is coming from transformer. So for your better understanding, let it described in another way. In normal condition, when transformer is not charged, the molecules of the transformer core is laying this. The molecules are laying randomly in this way. We know AC is traveling through sinusoidal wave. Similarly, जो alternating flux generate होता है AC system, that is also running in sinusoidal wave. तो जो पॉजिटिव में जब जाता है, when magnetic flux reach to the positive position, then the molecules of the core also change its direction like this. Again, when it will come to the zero, the molecules will come to his original position. Again, when it will run to the negative, again direction of the molecules change, and it is repeatedly happened with the cycle, with the sinusoidal wave. So the direction of the molecules in the magnetic core of a transformer is changing with the magnetic flux change, and due to this change there is one humming sound is coming, and this effect is called magnetostriction. So due to the magnetostriction effect of the transformer core, the humming sound is coming for transformer when it is loaded or when it is run in load.